Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So as you know that we are going to discuss Canto 3 today. So let's see what is going to happen in this Canto. As you know that in the previous Cantos we came to know that the selves or especially the self who is the spirit Ariel is very much concerned with the chastity and with the the things regarding Belinda, and she does not want to happen anything with Belinda, and she's very much concerned because she has tell this to Belinda that something bad is going to happen today. So now let's see that what is going to happen actually. So the boat arrives at Hampton Court Palace, and the ladies and gentlemen they just get ready, and they just start having the courtly amusements. After a pleasant round of chatting and gossip, Belinda sits down with two of the men to a game of cards. Now, the game of cards is going to be started, and Belinda is actually sitting down with two of the men. Now, this thing is going to, is necessary to be memorized. That Belinda, she was sitting with two of the men while she was making up her mind to play the game of cards. अब यहाँ पे वो दो जो शख्स होते हैं जिनके साथ बैठ के बेलिंडा जो है वो प्लान करती है that she will play the game of cards. And the other thing that can also be asked in the form of MCQs is that which game they were, or Belinda, she was playing with some other two men. So it was the game of cards. So they play Omber. अब Omber क्या है ये आपको बताना चाहिए. Omber जो है वो खेल रहे थे. A three-handed game of tricks and trumps, somewhat like bridge, and it is described in terms of a heroic battle. अच्छा अब वो ओम्बर खेल रहे हैं जो कि गेम है कार्ड्स की, और ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक गेम नहीं है, rather it is somewhat a heroic battle that they are going to fight. ठीक है वो they are very much serious. So the cards are troops combating on the velvet plain on the card table. वो जैसे वो उसने कहा कि velvet जो plane है उसके ऊपर जो the cards the in it just seems like it is something, you know, please ignore this. Okay, so we are just seeing that it is just like they are going to fight a battle while they were playing the cards. Belinda, under the watchful care of the selves beings favorably, she declares spades as trumps and leads with her highest cards. अब जो है वो sure of success. Now it was seen like Belinda will win the game of cards because she was very much active, and she was playing so well. Soon, however, the hand takes her turn for the worse when to the barren fate inclines the field. But later on, just after that, हमें ऐसा लगता है जैसे Belinda she will win. But soon it seems like कि Baron का turn आ गया और अब Baron जो है he will take the lead. He catches her king of clubs with his queen and then leads back with his high diamonds. Belinda is in danger of being beaten but recovers in the last trick so as to just barely win back the amount she bet. अब जो क्या होता है later on कि Baron के chances लग रहे होते हैं, लेकिन soon Belinda she just took her last chance, and she was able to win the game. So the next ritual amusement is the serving of coffee. अब जो है जी coffee time आ गया इनका. The curling vapors of the steaming coffee remind the Baron of his intention to attempt Belinda's log. अब यहाँ पे जो curling जो vapors आपको पता है ना कि जब हम whether it's coffee or tea, तो उसमें से ना वो एक वेपराइजेशन हो रही होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ कर्ल्स वो वेपराइजेशन हो रही होती है, वो थोड़ा सा स्मोक सा निकल रहा होता है. अब ये वो चीज बैरन को बेलिंडा के लॉक काटने की बात को याद दिला देता है उसको दोबारा कि he is going to become very much active because the
the main purpose of Baron over coming over here is that he will cut the Belinda's lock. Now Clarissa draws out her scissors. Scissors निकालती है for his use, उसके इस्तेमाल के लिए, as a lady would arm a knight in a romance. Now you are going to see कि क्लारिसा होती है जो हेल्प करती है बैरन की बेलिंडा का लॉक काटने में. She was the one who was providing the Caesars. तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या चीज क्लारिसा ने दी थी, ठीक है, टू कट बेलिंडाज हेयर. किसको दी थी? बैरन को दी थी. क्या चीज दी थी? सीजर्स दी थी. किसने दी थी? क्लारिसा ने दी थी. तो इसी one line is having a lot more things to be asked in the form of MCQs if your exam is going to be like this way. Otherwise, short answers में भी पूछा जा सकता है कि who gave the scissors to the baron to cut Belinda's hair. The other question can be what Clarissa gave to the baron to cut Belinda's hair. क्या दिया था उसने? scissors दी थी. और Clarissa gave scissors to whom in order to cut Belinda's hair. तो वो बैरन को दी थी. तो इस तरह से आपको short question के form में भी it can be asked. Okay, so taking up the scissors, he tries 3 times to clip the lock from behind without Belinda seeing. तो 3 बार कोशिश की है. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. जो सीजर्स लेने के बाद 3 बार कोशिश किया है कि वो पीछे से ना बेलिंडा का लॉक काट दे, उसको पता भी ना चले. The cells endeavor furiously to intervene, blowing the hair out of harm's way and tweaking her diamond's earring to make her turn round. अब जो सेल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और वो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी अटेम्प्ट से. Okay. Then what happens? Ariel, in a last-minute effort, gains access to her brain, where she is surprised to find an earthly lover lurking at her heart. He gives up protecting her then. The implication is that she secretly wants to be violated. Finally, the shears claws on the curl. A daring self jumps in between the blades and is cut in two. क्या होता है कि जो सेल्फ बीच में आने की कोशिश करती है ना, वही कट जाती है. अब यहाँ पे आप देखें how the scenes are, how they are entertaining and how interesting they are. They were placed in order to protect Belinda, and what happened, that self she was cut, but being a supernatural creature he is quickly restored. लेकिन क्योंकि वो एक supernatural creature होती है तो जल्दी से ही वो दोबारा जुड़ जाती है, दोबारा restore हो जाती है. So the deed is done and the Baron exults while Belinda's screams fill the air. लेकिन क्या होता है कि बैरन कामयाब हो जाता है बेलिंडा का हेयर, उसका लॉक है उसको काटने में. और what happens, what it leads to, कि Belinda is screaming and the air, it was filled with Belinda's screams when she was yelling. Now, this canto is full of classic examples of Pope's masterful use of the heroic couplet. Heroic couplet इसने इसमें use किया है in introducing Hampton Court Palace. कि उसको बताने में, he described it as a palace where Queen Anne does sometimes counsel take and sometimes tea. कि वहाँ पे Queen Anne जो थी ना, she used to take sometimes tea there. This line employs the rhetorical device, Zegma, a rhetorical device in which a word or phrase modifies two or other words or phrases in a parallel construction, but modifies each in a different way or according to a different sense. अब जो यहाँ पे Zegma एक rhetorical device उसने यहाँ पे use की है, जिसमें जो words होते हैं और phrases होते हैं वो ये मॉडिफाई करते हैं दूसरे वर्ड्स को और दूसरे फ्रेजेस को, और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये मॉडिफाई करते हैं
हर दफा डिफरेंट वे में और डिफरेंट सेंस में। ठीक है जी। आई एम गिविंग यू द टास्क दैट यू आर गोइंग टू सर्च दिस लिटरेरी टर्म। हाँ, अब आपने देखा कि एक नई एक रिटोरिकल डिवाइस का लफ्ज भी इसके लिए यूज होता है, लिटरेरी डिवाइसेस के लिए। होपफुली दैट यू डिस्कस्ड those literary devices. Okay, so now we are going to check. Here, the modifying word is take. It applies to the parallel terms counsel and tea. But one does not take tea in the same way one takes counsel. You know, counsel के लिए take भी इस्तेमाल किया और उसने टी के लिए भी take का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्होंने बताया ना पैरेलल में करता था वो यूज। एंड द इफेक्ट ऑफ सिग्मा इज टू शो द रॉयल रेजिडेंस एंड as a residence as a palace that houses both serious matters of the state and frivolous social occasions also. उसके कहने का मतलब ये है, पैरेलल उसने यूज किया है कि काउंसिल करने के लिए और चाय के लिए। अब एक ऑफिशियल काम है, सोशल है, स्टेट का मैटर है, और एक जो एक सीरियस मैटर है, और एक बिल्कुल टेकिंग टी, enjoying sort of the thing, entertaining sort of the thing. It is also happening in the same place. Okay, so then the reader is asked to, feel the paradox and to reflect on the relative value and importance of these two different registers of activity. For for another example of this rhetorical technique, we are going to follow the lines. Note louder shirts to pitting heaven are cast when husbands or when lapdogs breathe their last. तो हम देखें कास्ट और लास्ट राइम स्कीम ए यूज हुई है यहाँ पे, कास्ट और लास्ट। ठीक है, और इसने यहाँ पे उसकी शर्ट्स की बात की है और साथ इसने लैपटॉप्स की बात कर दी है। So both the things, one is a very serious matter and the other is like the entertaining or the frivolous sort of the thing. A similar point is made in a less compact phrasing in the second and third verse paragraphs of this canto. Here, against the gossip and chatter of the young lords and ladies, Pope opens a window onto more serious matters that are occurring meanwhile and elsewhere, including criminal trials and executions and economic exchange. अब यहाँ पे उन्होंने जो सीरियस मैटर को भी पोप ने दिखाया, जहाँ पे उसी दौरान में जिसपे इकोनॉमिक एक्सचेंज पे उसने बात की, क्रिमिनल ट्रायल्स पे बात की, एग्जीक्यूशंस की बात की। ठीक है, और यहाँ पे मोर सीरियस मैटर जो है वो लेटर ऑन ही डिस्कस्ड। So the rendering of the card game as a battle constitutes an amusement and deft narrative feat by parodying the battle scenes of the great epic poems. क्योंकि ये मोक एपिक है तो उसने बैटल को ऐसे दिखाया है कि जैसे कोई मतलब गेम खेल रहे हैं वो कार्ड्स की, और ऐसे दिखाया है कि जैसे ड्वेलिंग है, जैसे मतलब दे आर फाइटिंग अ बैटल एंड दे आर इन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों आप देखिए सीरियस इतना मैटर है मतलब बैटल फील्ड में, हैविंग द बैटल और हैविंग द फाइट, और दे आर प्लेइंग द कार्ड्स। तो उसने हर जगह पे जिग्मा की जो टेक्निक है थ्रू आउट फॉलो की है। Okay, so Pope is suggesting that the energy and passion once applied to grave and serious purposes is now expanded on such insignificant trials as games and gambling. तो उसने कहा है कि जब एनर्जी और पैशन अगर अप्लाई किया जाए ब्रेव और सीरियस पर्पसेस के लिए, जो जिसको अप्लाई किया जाता है, एनर्जी और पैशन आप किस लिए रखते हैं, सीरियस पर्पसेस के लिए, और जो है वो जहाँ पे आप मतलब ब्रेवरी दिखानी होती है और सिग्निफिकेंट जो ट्रायल्स होते हैं वहां के लिए, लेकिन ये यहाँ पे खर्च की जा रही है बहुत इनसिग्निफिकेंट ट्रायल्स पे, जैसा कि गेम्स और गैम्बलिंग। ठीक है जी, which often become a mere front of flirtation. So the structure of the three attempts by which the lock is cut is a convention of a heroic challenges. वो ऐसे लग रहा है इसने उसका जो कट करना ना लॉक, वो किसी चैलेंज से कम नहीं था, और वैसे ही था बैटल फील्ड में
जब वो बैठा हुआ है स्कूल और वो मौके की ताक में है कि when he is going to get the chance and he is going to perform whatever he was wanting to. So this was the thing actually. So, particularly in the romantic genre, the romance is further invoked in the image of Clarissa arming the Baron, not with a real weapon, or but with a pair of swing scissors. तो क्लैरिसा तैयार कर रही है जी बैरन को, और वो किसके साथ तैयार कर रही है उसको? पेयर ऑफ सीजर्स के साथ. ठीक है. Brenda is not a real adversary or course, and Pope makes it plain that her resistance and by implication her subsequent distress is to some degree an affectation. So the melodrama of her screams is melodrama का word उसने use किया है कि वो जो चीखे मार रही थी कि पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, ये ना दिखाया तो हुआ है कि बहुत ही एक छोटी सी बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है आजकल की गर्ल्स के लिए भी ये छोटी बात नहीं है. That someone is going to cut the beautiful lock of a girl's hair. It is really not bearable for the girls. ठीक है, तो उन्होंने इसको मतलब क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी. अच्छा जी, so the is complemented by the ironic comparison of the Baron's feat to the conquest of nations. ऐसा लगता है जैसे नेशन की कॉन्क्वेस्ट थी जो उसने जो है वो बेलिंडा का कट कर दिया है. So this was Canto 3. Now we are moving towards Canto 4. Okay, so Belinda's anxious cares and secret passions after the loss of her love are equal to the emotions of all who have ever known rage, resentment, and despair. So she's she's so much upset that she is full of rage, full of anger, full of resentment, full of restlessness and despair. After this disappointment, selves withdraw an earthly genome called umbrail. इसके बाद उसकी डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो सेल्फ जो है वो जाती है और एम्ब्रेल से जो है वो व्हाट शी डज फ्लाइज डाउन टू द केव ऑफ सप्लीन के पास जाती है. The spleen and organ that removes disease causing agents from the blood stream, जो कि आपके blood stream से जो disease cause करने वाले agents हैं उनको निकाल देती है, remove कर देती है, was traditionally associated with the passions, particularly uh, जो malice. Spleen is a synonym for ill temper. तो ill temper के लिए जो है ना spleen उसका रोल ये है. So in his descent, he passes through Belinda's bedroom when she lies prostrate with discomfort sort of the thing and the headache. तो वो क्या करती है, वो जाती है और उसके लिए मतलब लेकर आती है उसके लिए anger and all. So she is attended by two handmaidens, ill nature and affectation. दो लेकर आती है. Umbrel passes safely through this melancholy chamber, holding a sprig of spleen wort before him as a charm. So he addresses the goddess of spleen. उसे अम्ब्रेल जो है उसको goddess of spleen जो है is उसके साथ बात कर रही है and returns with a bag of sighs, sobs and passions. और लेकर क्या आती है? रोना धोना और पैशंस. ठीक है. एंड वाइल ऑफ सोरो ग्रीफ एंड टीयर्स. उसके लिए सोरो ग्रीफ टीयर्स ये सब कुछ लेकर आती है. सो ही अनलेशेस द फर्स्ट बैग ऑन बेलिंडा. तो पहले वो क्या करती है? फर्स्ट बैग बेलिंडा को देती है, फ्यूलिंग हर आयरन डिस्पेयर टू मेक हर फुल ऑफ डिस्पेयर. ठीक है. अब यहाँ पे कितना फनी है कि इंस्टेड के उसको इन चीज़ों से रोका जाए टू बी डिसअपॉइंटेड एंड टू बी सो सीरियस अबाउट दिस इशू. हो क्या रहा है कि वो उसके लिए बकायदा तैयारी कर रही है रोने धोने की उसके लिए. ठीक है. सो अगेन दिस इज आयरोनिक एंड दिस इज criticism actually on the trivialities of the incidents and how people get serious on the trivial things.
अच्छा जी. So they were two, having a consoling sort of the session with Belinda is her friend Thelestris. In Greek mythology, Thelestris is the name of one of the Amazons, a race of warrior women who excluded men from their society. फारिग कर दिया था सारे मेन को. अच्छा आपने ना इन चीज़ों को याद रखना है. सेल्फ्स कितनी थी, कौन कौन सी थी, फिर कहाँ पे जाती है एरियल, क्या लाती है उसके लिए, किससे रिक्वेस्ट करती है, क्वीन ऑफ सप्लीन से करती है, और जो अम्ब्रेल है, ठीक है, और इस तरह की सारी चीज़ें आपने मेमोराइज कर लेनी है. So Thelestris delivers a speech calculated to further foment Belinda's indignation and urges her to avenge herself. She is going to produce the emotions of revenge. She then goes to Sir Plum, her bureau, to ask him to demand that the Baron return the hair. फिर जाती है सर प्लम के पास और उसे कहती है कि बैरन से कहा जाए कि उसका हेयर वापस कर दे. Sir Plum makes a weak and slang-filled speech to which the Baron disdainfully refuses to, act accordingly. वो कहता है, refuse कर देता है कि that he won't take the lock back to Belinda. At this, Umbrail releases the contents of the remaining vial, throwing Belinda into a fit of sorrow and self-pity. वो फिर उसको एक दफा एक blow देती है, sighs का, sobs का, tears का. Now, with beauteous grief, she bemoans her fate, regrets not having heeded the dream warning, and laments the lonely, pitiful state of her sole remaining girl. अब यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि उसको नहीं आना चाहिए था और उसको वार्न रहना चाहिए था कि जब प्रोफेसी कर दी गई थी कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, सो शी शुड नॉट हैव गॉन और डू ऑल दिस, ओके जी, कमेंट्री क्या कहती है? So the canto opens with a list of examples of rage, resentment and despair. तो आपको पता होना चाहिए कि rage, resentment, despair, disappointment, crying, sighing, sobbing, all this is a part of Canto 4. ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये बात. Comparing on an equal footing the pathos of kings imprisoned in battle, of women who become old maids of evildoers who die without being saved, मर गई, and of a woman whose dress is disheveled. By placing such desperate sort of aggravation in parallel, Pope actually have the absolute necessity of assigning them to some rank of moral import. The effect is to chastise a social world that fails to make three distinctions, these distinctions sort of the things. तो पोप ने यहाँ पे जो कि एक उसके साथ बैटल फील्ड के साथ उसको करके कंपेयर और फिर इस तरह से उसको दिखाया है कि कैसे सोशल वर्ड जो है वो उसका क्या इफेक्ट होता है जो है वो इस तरह की अगर मुनफरिद चीजें हों तो. Umbrail's journey to the cave of Spleen mimics the journeys to the underworld made by both Odysseus and Aeneas. So Pope uses psychological allegory. Allegory मैंने आपको बताया था क्या होती है, लेकिन this time I'll ask you guys. For the spleen was the seat of malice or melancholy, as a way of exploring the sources of and nature of Belinda's feelings. तो उसने कितनी जो क्वीन ऑफ स्प्लीन है उसकी हेल्प से बेलिंडा का रोना धोना स्टार्ट रहता है. ठीक है जी. So the presence of ill nature and affectation as handmaiden serves to indicate that her grief is less than pure. Pure से less than है, affected है and put on, and that her display of temper has hidden motives. कि वो जो emotions दिखा रही है ना, उसका जो temper है उसमें कुछ hidden motives हैं. We learn that her sorrow is decorative in much the same way the curl was. तो उसका sorrow भी उतना ही decorative था. रोना धोना भी बहुत sophisticated अंदाज से कर रही है कि उसकी beauty के ऊपर असर ना पड़े. It gives her the occasion, for example, to wear a new night dress. वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको ना बकायदा जो है वो उसने तैयारी की है
रोना धोना करने के लिए. Okay, so the speech of Thalestris invokes a courtly ethic. She encourages Belinda to think about the Baron's misdeed as an affront to her honor and draws on ideals of chivalry in demanding that Sir Plum challenge the Baron in defense of Belinda's honor. उसको challenge करता है. Plum, तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज भी. He makes a model of the task, showing how far from courtly behavior this generation of gentlemen has fallen. Sir Plum's speech is riddled with foppish slang and has none of the logical, moral, or oratorical power that knight should properly wield. जिस तरह की एक knight में होनी चाहिए. मतलब ये बात ही छोटी सी थी तो उस पे कैसे उसकी स्पीच कर रहा है वो, और उकसाने के लिए कि मतलब जो था बहुत गलत था और ही शुड गिव बैक लिंडाज हेयर एंड ऑल. अच्छा जी. So this attention to questions of honor returns us to the sexual allegory of the poem, the real danger. जो sexual इसकी allegory यहाँ पे use हुई है. Thalestris suggests that the ravisher might display the lock and make it source of public humiliation to Belinda and by association to her friends. उन्होंने कहा कि जो वापस नहीं करा ना कर ये, और ये सब कुछ पब्लिक ह्यूमिलिएशन है बेलिंडा के लिए और जो भी बेलिंडा के साथ हुआ है. Thus the real question is superficial one, public reputation, rather than the moral imperative to chastity. मतलब morally उसकी chastity के लिए कोई बात नहीं है, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि किसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये एक पब्लिक रेपुटेशन है, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, जिसकी वजह से they are very much concerned. So Belinda's own words at the close of the canto corroborate this suggestion. She claims, "Oh, hadst thou, cruel, been content to seize hairs less in sight, or any hairs but these." So the hairs less in sight suggests this is somewhat sexual connotation here is. Pope is pointing out the degree to which she values outward appearance, कि वो आउटवर्ड अपेयरेंस को लेके कितना कंसर्न है. और जो पीछे अभी बात हुई तो उसने मतलब उसकी चेस्टिटी के लिए शी इज नॉट कंसर्न. तो यहाँ पे ट्रिवियलिटीज की और इन चीजों का जिक्र है कि शी वाज नॉट कंसर्न विद हर चेस्टिटी, विद द लॉस ऑफ हर चेस्टिटी, और वो कह रही है कि इससे अच्छा तो ऐसा हो जाता. ठीक है, और लेकिन मेरी आउटवर्ड अपेयरेंस ना खराब करता, वो मेरा ये लॉक ना काटता. So, whether beauty or reputation above all these, she would rather suffer a breach to her integrity than a breach to her appearance. मतलब उसको इस चीज का नहीं है कि it was the rape of the lock of the hair. Rather, she was ये sexual connotations हैं. बाकी आपको खुद पढ़ के समझ आ जाएगी कि what actually she was trying to point out कि ये ना करता, इससे अच्छा तो वही बेहतर था. ठीक है जी. So I think this is enough, and tomorrow, inshallah, we will discuss Canto 5, and that will be the last Canto, inshallah. So up till now, we just आपने देखा कि Belinda, she was concerned with the apparent beauty only, and she was not concerned with her chastity or with her honor. और उसको ये बहुत मतलब बात उसको चुभ रही है, रादर देन कि उसको गुस्सा आए कि अगर मतलब ये तो आम सी बात ही, लोग काट दिए, शुक्र है कि हर चेस्टिटी वाज सेव्ड और इट वाज प्रोटेक्टेड. तो वो कह रही है कि मतलब नहीं, व्हाट व्हाई इट हैपेंड. तो उसके अकॉर्डिंग टू हर व्यूज ये ज्यादा बुरा हुआ है उसके साथ कि बैरन ने लॉक काट दिए बालों का. तो यहाँ पे पॉप ने एक्चुअली क्रिटिसाइज किया है कि कैसे लोग जो हैं वो उस टाइम पे जो अरबेला फॉर्मर के भी उसके ऊपर कि मतलब पीपल आर नॉट कंसर्न विद द इश्यूज दैट आर वर्थ डिस्कसिंग, रादर वो इतनी फ्रिवलस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स में दे आर इन्वॉल्व, और
उनके लिए trivial things they matter more rather than the issues that should be worth noticing. Okay, so this is all for today. Let's have a discussion.